callable statement, तो हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था callable statement का. So the thing is, one minute. Just a moment, guys. Yeah, fine. Let me just open. So here we have callable statement is nothing but a child interface of actually prepared statement. Prepared statement is nothing but a child interface of actually statements. So indirectly आप देखिए तो callable statement is a child interface of statement interface. Okay, but which में actually prepared statement है हमारे पास. Now what is the use of the callable statement? It is just used to invoke, otherwise it is just used to call or make a request to invoke function or procedure which exists on a database. So database में अगर आपके पास कोई function और procedure है तो उसको run करने के लिए actually callable statement चाहिए. So first of all, we have to be familiar how to define the function or procedure in the database. So guys, first of all, उससे भी पहले हम लोगों ने एक difference निकाला था. What is the difference between function and what is the difference between actually procedure? So actually, function always return something and procedure will never return something. Okay, procedure कभी भी कुछ भी return नहीं करेगा and function always return something. So this is the difference between procedure and function. That is the difference between procedure and function. Now, how to define the procedure or function in database? So I'm looking at simple example here. The create procedure display. What is the display? It's a procedure name, and procedure means what? It will never return. And after the begin and end, what is the begin and end? It is just used to represent these curly brackets. And now, what is the select hello? It is just print hello. So हमने उसका equivalent C language function भी लिखा था और उसको हम लोगों ने like MySQL or whatever the database is there, उसके अंदर convert किया था. That's that. Now find how to call this one. So we have a function. So we have for that actually we have a statement call display or call display, but whatever the function name is there, उससे पहले हम लोग को call keyword लिखना है. So now the thing is, अगर मैं ये same चीज MySQL के through run करना चाहूँ तो मतलब सर ये same चीज मैं actually Java के through run करना चाहूँ तो so what we have to do now? We have to create an object of callable statement. Now we have to create an object of callable statement. So how to create the object of callable statement? Simply we have to write down callable statement CS is equals to like con dot prepare call in the bracket you have to pass the query. Now similar thing is there. हमारे पास वही function से query को execute करने के लिए execute query, execute query, execute update और execute. मैंने यहाँ पे execute query function run किया, result set मिला और हम लोगों ने वहां से result set fetch किया था. So that is that. ये हम लोगों ने last session में complete किया था. Okay. Now I hope यहाँ तक किसी को कोई problem नहीं होगा. Now let us just do one thing. अब हमारा जैसे database का नाम था temp1 जिसके अंदर हमने दो processes बनाए थे display and display. Okay, let me once again open the database. Ensure MySQL console. Let me open and let me define some another functions actually with some arguments. Let me define a procedure with arguments. So आज हमारा main topic होगा like in, out and in out arguments. So in short, the next concept is callable statements will have three different types of arguments. Callable statements supports three different types of arguments. The first one is in, second one is out. And third one is actually in. Okay, so let me just go through that. So let me just give the title, parameter types of callable statement. The first one is in, second one is out, third one is in out. So there are three different types of in, out and in out. So ये तीन अलग-अलग types guys हम लोग को क्यों मिले? Because that is because of actually MySQL or whatever the database software is. Actually, callable statement is just used to call the function. उसका तो simple सा task है, वो सिर्फ function call करता है. अब अगर आपका MySQL और Oracle तीन अलग-अलग के type के parameters support करता है, तो callable को भी support करने पड़ेगा. Okay, callable statement को भी वो support करना पड़ेगा. So सबसे पहली चीज हम लोग callable statement का help open कर देते हैं. So how to open the help? For that debug हम लोग को क्या लिखना था? Java P in java.sql dot callable statement. And यहाँ पे मुझे लिखना है more in the sense एक page wise मुझे output देगा. Just go through the functions. तो पहला ही function मेरा क्या है? Void out parameter.
void out parameter. So what is that void out parameter? So out parameter मतलब आपने जितने भी arguments रखे, जो भी queries में जितने भी argument रखे, उसमें से कितने out parameters हैं. Okay, so that is void out parameter. Now what about another registered out parameter with integer, integer, integer? 3 arguments are there. वो 3 argument का क्या concept है वो बाद में देखते हैं. But now another thing is after that we have some getter methods. तो एक बार ये getter methods देखिए. Okay, up to this. So पहला getter method क्या था? Get string, get boolean, get byte, get short, get integer, get long, get float, get double. So in short, जब आप query fire करोगे, जब आपको data वापस चाहिए, you have to just go through all these functions. Okay, so like these all are the getter methods. In a similar way, we have some setter methods. Sorry, in a similar way, we have some setter methods. We have. So हर एक data type के लिए एक setter method का list भी हमारे पास है. So getter and setter. Now here we have actually character strings. So character strings, it is just used to work with the files. And one more thing is there, blob and glob. So what is the blob and glob? That will be the next session. Sorry, that will be the next topic. Like I want to store image in my database, or I want to store actually the whole file in my database. So for that, actually we have to use glob and glob data type. Or guys, you can just use character strings, okay, or binary string, guys, you can just use. So what is the character string, binary string, glob and glob, that we will cover in next session, but just go through this one. So in callable statement, we have right now we just got 2 functions to register our parameter as an out parameter, and remaining are nothing but a getter setter. Remaining are nothing but a getter setter. Now we have bunch of methods over here also. That is also a registered out parameter. That is also registered out parameter. But data type is different. In a first register out parameter method, there are integer as an argument, and here our arguments are integer and SQL type, integer SQL type, integer SQL type, string SQL type, string SQL type, and string SQL type. Something like that. So let me just use all this one by one. हम इनको एक बार use करते हैं. So that's that. So this is something about actually callable statement. Callable statement क्या था वो हमको पता है, but अब उसके अंदर के functions भी हमको पता है. Why we just go through these functions? Because right now we realize one thing कि हमारे procedure या function में जो हम MySQL या कोई भी database software में develop करेंगे, इस procedure में 3 तरीके से arguments पास कर सकते हैं. Right now मैं function नहीं ले रहा, because function और procedure में सिर्फ इतना सा different है. Actually एक return कर सकता है data, एक return नहीं करता. तो हम लोग सिर्फ procedure पे focus कर रहे हैं और procedure के arguments पे focus कर रहे हैं. Okay, so now let me start. So argument 3 अलग-अलग type के हो सकते हैं. In, out and in out. In is by default. So पहले ये समझ लेते हैं. In is by default. So by default जितने भी आप arguments लेते हैं, that is by default type of in. Okay, but still let me just open the console and I want to use that in keyword. Guys, be careful. अब थोड़ा सा focus करना है. Okay, सबसे पहले तो मेरा database का नाम था temp. तो मुझे वो temp नाम का database चाहिए. So I just write down use temp या temp1 whatever. अब इसके अंदर मेरे पास कितने टेबल्स है, तो हमने एक भी टेबल नहीं बनाया, बट स्टिल लेट मी जस्ट चेक. सो वी हैव नो टेबल्स एट ऑल. बट हमारे पास 2 फंक्शन थे. कौन कौन से 2 फंक्शन थे? एक तो डिस्प्ले जो लास्ट सेशन में हमने डेवलप किया था, जो हेलो डिस्प्ले कर रहा था, एंड एक था डिस्प्ले1 जो एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा था, वेलकम टू सूरत, बट उसका टाइटल था एमएसजी. सो दीज आर द फंक्शंस जो हमने लास्ट सेशन में डेवलप किए, बट किसी ने भी आर्गुमेंट नहीं. जस्ट यहाँ भी ब्रैकेट में कुछ नहीं है, यहाँ भी ब्रैकेट में. Now what is my requirement? I want to just define a function with 2 arguments. और जैसे मैं 2 argument दूंगा वो उसका summation करके print करेगा. Simple function I want to define. In short, I want to define this type of thing. Void add integer a, integer b, curly bracket. Now integer c is equals to a plus b, and I want to print this c. ऐसा कुछ मुझे चाहिए. Okay, even though आप a plus b भी नहीं करना चाहते, सॉरी c भी नहीं डेवलप करना चाहते, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो. So ऐसा कोई फंक्शन मुझे MySQL में डेवलप करना है. So it's not a function right now, we will say it's a procedure because return type is. So मुझे आप हेल्प कर सकते हैं, मुझे क्या लिखना चाहिए? अगर मुझे प्रोसीजर डेवलप करना है, then what I have to write down is Deepak, Sneh, yes anyone guys? Meet sir, Fakre Alam sir, Vinal, Tushar, Amisha, Kaushik. क्या लिखे गाइस? सर इंटीजर ए बी. सबसे पहले तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. void की जगह क्या लिखना चाहिए? I have to write down create procedure. तो void का मतलब आ गया. Okay, so void मतलब return type नहीं होगी. सिंपल रिटर्न टाइप नहीं. उसके बाद यस insert add
बिकॉज फंक्शन का नाम। उसके बाद गाइस आर्गुमेंट्स कितने, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी आर्गुमेंट्स आर देयर? देयर आर 2 आर्गुमेंट्स। हम लोग सी लैंग्वेज में कैसे लिखते थे, इंटीजर a कोमा इंटीजर b, यहां आपको ऐसा लिखना है a इंटीजर b इंटीजर। ओके, अब आप ऐसा बोलोगे सर ये कहां से लेके आए? तो गाइस आप जब टेबल बनाते थे, टेबल बनाने का क्वेरी क्या था? द क्वेरी वाज क्रिएट टेबल and then table name, let I say that is let I say that is actually employee, और हम यहाँ लिखते थे id integer f name varchar something like this, हम लोग ऐसा कुछ लिखते थे। तो देखो ये id integer का मतलब दैट्स integer id। तो यहाँ डेटा टाइप बाद में लिखा जाता है, पहले वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। सेम सिंटैक्स आई जस्ट फॉलो। Okay, so create procedure in the sense I want to define a function without return type. So without return type, that's actually a procedure. So simply we have to write down create procedure, then procedure name. So my procedure name is add. After that, integer a comma integer b, that will be written as b, sorry, a comma a integer comma b integer. That's it. Now what about this curly bracket? इस curly bracket को कैसे हम लोग justify करें? For that we have to write down begin. What about the closing curly bracket? That can be justified with actually add. Okay, उसको कैसे लिखें? And that's it. So that is the actual general function. That is actually general format. What about this printf? Printf in the sense that is select. Printf in the sense that is select. Now, what about this? मुझे a plus b लिखना था. Just write down a plus b. That's it. So that is the thing. This is my process. Now, before that, मुझे limiter, delimiter change करना है. So let us just change the delimiter, and here also we'll just change the delimiter, considering the semicolon. And to just end this procedure, we will use updated delimiter. हम वहां पे updated delimiter use करेंगे. So that's that. That is something about our procedure with R. Let I copy this और ये same चीज मैं यहाँ पे paste करूँ. So now what is the problem? कहीं पे एक problem है, a integer b integer. You have an error. Okay, sorry. Add we cannot use. Add is a predefined function, so we cannot use. Let I say addition. Okay, let me just say addition. Procedure का नाम add use करना allow नहीं. Let me just choose addition actually. No, it's fine. Just check. पहले मैंने delimiter यूज किया डबल स्लैश. We just write down create procedure addition a integer b integer begin select a plus b and double slash. Why double slash? Because we just update the delimiter. Finally, delimiter will be restored to the semicolon. Now let me just call our procedure. How to call, guys? So for that मुझे क्या लिखना है? Call addition and let I just pass two value 10 and 20. So it returns 30. उसने मुझे 30 रिटर्न किया. Why? Because हम लोगों ने अंदर लिखा सिलेक्ट a plus b. रिटर्न नहीं किया, उसने डिस्प्ले किया ऐसा. ओके, और ऊपर टाइटल में a plus b क्यों है? बिकॉज़ हमने कोई टाइटल ही नहीं दिया. तो यहाँ टाइटल देना तो क्या लिखते? a plus b as summation, as addition. लास्ट टाइम हमने लर्न किया था ऐसा कुछ लिखना था, like select a plus b as addition, something like this. ओके, तो a और b का समेशन करके उसको मतलब जो भी आंसर आ रहा है उसके ऊपर टाइटल में क्या आता है? दिस विल बी द टाइटल. Okay, this will be the title. I do not want to update this right now. Okay, so this is the procedure. ये procedure. Now I want to call this procedure. Okay, मुझे ये procedure call करना है. So what to do? Let I just copy paste this program. So call with some parameters. So callable statement with arguments. अदरवाइज कॉलेबल स्टेटमेंट का यूज करके मुझे किसको कॉल करना है? प्रोसीजर विथ आर्गुमेंट्स. Okay, procedure with arguments. That's fine. So now what we have to change? We have to just change the name of the function. So यहाँ पे मेरे function का नाम क्या था? That is actually addition. So in short, what you have to write down, guys? यहाँ आपने call करने के लिए क्या लिखा था? Call addition 10,20. So you have to write down the same thing. Call addition in the bracket 10,20. ये 10,20 आप user से भी last थे. So how to get this value right now? Just let me just use the static value. उसके बाद value change करते हैं. बाद में मैंने prepare call के अंदर query pass किया, function को call किया, data print किया. ये बाकी सब चीजें हम last session में complete कर चुके थे. मैंने सिर्फ procedure का नाम change किया. So Java C call to Java. Now let me just set the class path. Okay, now class path set किए बिना run करेंगे. Then right now in this system still हम लोगों ने bug solve नहीं किया. Okay, what is the problem? Actually test नाम का class ही उसको नहीं मिल रहा. तो मुझे सबसे पहला पाथ कहाँ तक का सेट करना है? सबसे पहला पाथ मुझे कहाँ तक का सेट करना है? जहां मैंने प्रोग्राम स्टोर किया था. So what I have to write down? I have to write down set class path equal to dot semicolon and जहां मेरा प्रोग्राम स्टोर है. Okay, say drive user students desktop, let's say BSHDBC program. That's that. Now let me run this. So right now error is changed. अब वो मुझे ड्राइवर का इश्यू है. सर ड्राइवर नहीं मिला.
So where is your driver? So driver हम लोगों ने actually store किया था. This is our driver actually. Okay, so let me once again set the class path. Let me once again set the class path to JDBC and driver. Okay, now let me run. So that's fine. It works fine, and output is 30. Okay, output is 30. I hope you have the point problem. So what we did, firstly, we just defined the procedure in a database with arguments. Up to this, हम लोगों ने last session में procedure पे work किया था, but without arguments. Now I want to call this procedure, तो हमने उस procedure को call किया. We just call the procedure by passing the data. But now guys, मुझे ये data यहाँ से fix pass नहीं करना है. Okay, so just use a scanner actually. That's up to you. Let I just use scanner to fetch the data from user. And let me just give a message. Enter two numbers. Now integer a is equals to sc dot next int. Now integer b is equals to sc dot next. Now the question is, ये तो हमने लिख लिया. Now what will be the query? So let me just write down the query. मैं इसको यहाँ से कट करके query के ऊपर लिखता हूँ. Okay, now how to write down the query? So query guys हम prepared statement में ही learn कर चुके थे कैसे लिखना है. कि जहाँ पे arguments होगी वहाँ पे हम लोग question mark लिखेंगे. That is actually parameterized query. Okay, so हम लोगों ने क्या लिखा? Call addition question mark question mark. Now this query you have to pass to callable. ये query मुझे callable को पेश करना. But now guys, you know callable के पास ये query तो pass हुई, but it has two question mark, which are two missing values. So how to pass this missing value? So right now we know callable के पास कुछ setter methods है. Let once again I open this. So callable के पास lots of setter methods. These are the getter method bunch. Getter in the sense जो method gets से start में, these are known as the getter. In a similar way, we have actually lots of setter methods. So right now, which type of data you want to set, guys? आपको ये missing values में कौन से type का data store करना है? ये जो missing values थी, question mark, वहाँ कौन से type का data रखना है? Sir, integer type. So which method I have to use? I have to use set integer function. I have to use. So here I have set integer function. So now set integer आपको दो different type पे मिलेगा. This is the set integer with actually string and integer. पहला argument type string है, second integer है. Second, you will get set integer. Just search that, guys. आपको set integer और एक मिलना चाहिए. I do not want to right now waste the time, but set integer with integer comma integer. Second argument is sorry, first argument के दो मतलब एक तो हमारे पास set integer ये रहा string comma integer. ऐसे ही एक दूसरा function हमारे पास है. That is actually integer comma integer. पहला integer क्या होगा? First integer is nothing but a number. कि आप कौन से question mark में data set करना चाहते हैं? जैसे मेरे पास यहाँ दो question mark थे. कौन से क्वेश्चन मार्क में डेटा सेट करना है? सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा set integer 1 a. What is that 1? What about this 2? 1 and 2 are nothing but in question mark number. In short, कौन सी आर्गुमेंट में डेटा सेट करना चाहिए? So question mark 1 उसमें मुझे a चाहिए, question mark 2 उसमें मुझे b चाहिए. Okay, उसमें मुझे b चाहिए. So I hope this is clear. Now मुझे स्कैनर के लिए एक इंपोर्ट करना है. So let me just import util for the scanner to support the scanner. So that's that. Now let me run. अब ये प्रोग्राम रन करते हैं. So java c equal to dot java. Now let me run java test. मैं यहाँ पे दो वैल्यूज दे रहा हूँ 50 and 20 आउटपुट 7. Let me once again pass two values 10 and 1. That's 11. So अभी ये प्रोसीजर कॉल हो रहा है जो मैं SQL पे पास किया, SQL पे रन किया, and it just return different answer. Actually C a plus b वो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा, वो डिस्प्ले कर रहा था. जस्ट चेक द प्रोसीजर, वो एक्चुअली डिस्प्ले कर रहा था. बट डिस्प्ले मतलब जैसे हमने यहाँ से रिक्वेस्ट किया, जावा ने रिक्वेस्ट किया MySQL को, MySQL ने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट मतलब वहां से इको हुआ, MySQL ने वहां से रिटर्न किया, रिटर्न करने का मतलब हम लोग को इज इट फाइन? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? So these arguments are actually known as in type of file. अब हम लोग को स्टिल पता नहीं चल रहा सर what do you mean by in? So let me just define one more procedure and the name of the procedure is multiplication. मैं ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, मैं फंक्शन का नाम चेंज कर रहा हूँ. मैं फंक्शन का नाम रख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन. नाउ गाइस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a in integer, b in integer, a in integer, b in integer. Now what is this in? It's a parameter type. It is nothing but a parameter type. Parameter type in the sense what? Like अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था. We have three different types of parameter: in, out and in out. हमने differentiate नहीं किया, but right now just use someone. Okay, let I just use either of the things. तो मैंने in use किया. That is by default. मतलब जो यहाँ पे आप use कर रहे हो ना, a integer, b integer, this is equivalent to that a in integer, b in integer. Okay, Oracle और SQL में से कितना सा difference है?
एक में वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप के बीच में इन आता है और एक में पहले इन लिखना है। पहले इन मतलब इन ए इंटीजर और एक में लिखना है ए इन इंटीजर सारे। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ए इन इंटीजर, ए इन इंटीजर। ओके, नाउ लेट अस जस्ट कॉपी दिस एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। So now what is the problem? Just check. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है कि सर आपने जो इन इंटीजर लिखा, it's not the right syntax. It is not the right syntax. So guys, this is Oracle syntax. यहाँ इन लिख देते हैं। Okay, यहाँ पे इन लिखते हैं। And one more thing, इन कैपिटल लिखना जरूरी नहीं है। You guys can use it in a small case also. Okay, once again let I just copy and paste this thing. जैसे मैंने आपको बताया था, एक में पहले लिखा जाता है, एक में इन बिटवीन लिखा जाता है। So now that's fine. It works fine. Just check. यहाँ पहले हम लोग को एरर दिया था, right now there is no error. So create procedure multiplication. Create procedure multiplication in a integer in b integer. What is that in? It's a type of argument. What is the use of that in? What is the meaning of that in? हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया, but just consider it is a type of argument. जैसे डेटा टाइप था उसी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स के कुछ टाइप, तो मैंने आर्ग्यूमेंट का टाइप सेट किया। फाइन, सो लेट मी रन। So now multiplication is there. So function name is multiplication. Let me call this multiplication with some arguments actually 1 and 2. So 1 and 2 का multiplication मेरे पास आना चाहिए। सॉरी, हम लोगों ने एक्चुअली प्रोसीजर में या मल्टीप्लिकेशन किया ही नहीं था। सॉरी, हम लोगों ने प्रोसीजर में एक्चुअली लाइक मल्टीप्लाई की जगह एडिशन यूज किया था। नाउ गाइस, मैंने यहाँ चेंजेस किया। अब वंस अगेन ये प्रोसीजर में यहाँ डिफाइन करने जाऊंगा तो मुझे क्या बोलेगा, सर प्रोसीजर ऑलरेडी है। ये प्रोसीजर तो ऑलरेडी है, आप मल्टीप्लिकेशन नाम का प्रोसीजर ऑलरेडी बना चुके हैं। सो नाउ व्हाट आई एम यूजिंग, मैं अब इसकी जगह ऐसा लिखूंगा क्रिएट और रिप्लेस। मतलब अगर प्रोसीजर है देन प्लीज रिप्लेस दैट प्रोसीजर। अगर प्रोसीजर आपके पास अवेलेबल है देन प्लीज रिप्लेस दिस प्रोसीजर। दैट्स दैट। नाउ जीरो रोज अफेक्टेड। एनी इश्यू गाइस? फकरे सर, कुछ प्रॉब्लम? Hello, sir. Okay, fine. So now let me call this multiplication. So answer is 2. Okay, 1 comma 2, that is 2. Now let I just call once again multiplication with 10 comma 20. The answer is, okay, no, I think spelling mistake. Multiplication. So answer is 200. Okay, now similar function guys you can call from the actually like Java by using this callable statement. So मुझे सिर्फ function का नाम change करना है, addition की जगह multiplication. That's pretty simple. But what is the meaning of this in? Now the question is, what is the meaning of this in? In का क्या मतलब है? So up concept start हो रहा है. That's nothing but in call by value. Wait, what is call by value? So let us just give you an example. Call by value in the sense, consider this is our okay, that was actually most ये आपने सबसे ज्यादा यूज किया हुआ फंक्शन है, most familiar function actually swap. Okay, आपको call by value, call by reference C लैंग्वेज में पूछा जाता था। So now let us say कि मेरे पास इस तरीके से कुछ डेटा है मेरे पास एक फंक्शन था swap with 2 arguments और उसका कामकाज एक्चुअली डेटा को स्वैपिंग करना है। ओके गाइस, जस्ट टेल मी वन थिंग, लाइक मान लो मेरे पास यहाँ पे x इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 200 कुछ करके वेरिएबल्स थे। ओके, मैं swap फंक्शन को कॉल करके x और y आर्गुमेंट पे पास कर रहा हूँ एंड नाउ आई वांट टू जस्ट यूज टू डिस्प्ले, आई वांट टू जस्ट डिस्प्ले दिस x एंड y। सो मैं x और y को डिस्प्ले कर रहा हूँ। व्हाट इज द आउटपुट? यस, यहाँ आउटपुट क्या आएगा? यस, एनीवन? यस गाइस, व्हाट विल बी द आउटपुट? 200 and 100. 200 100 आना चाहिए, but still the output will be 100 and 200. Why? स्वैपिंग नहीं हुआ, लॉजिक गलत था। तो लॉजिक गलत नहीं है। क्या होगा जब आप x और y आर्गुमेंट में पास करोगे तो x किसमें स्टोर हुआ? a के अंदर। y किसमें स्टोर हुआ? b के अंदर। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मेरे पास इंटीजर a इक्वल्स टू 100 है, इंटीजर b इज इक्वल्स टू a है। अब what is the value of a and what will be the value of b? What will be the value of a and what will be the value of b? इनका वैल्यू क्या होगा? Yes, but obvious दोनों का वैल्यू 100 100 होगा। Now let I just change the value of a to 99. मैं a का वैल्यू चेंज करके 99 कर देता हूँ। So now what will be the outcome? Yes guys, 99. दोनों में? Yes sir. दोनों में 99 आएगा? I don't think so. यहाँ पे आउटपुट क्या आना था? यहाँ पे 100, here it will be 100, यहाँ पे 99 I can understand, but what about this one? This will be 100 क्योंकि ये डुप्लीकेट कॉपी की है, मतलब b नाम का नया वेरिएबल बनाएगा इस। जैसे देखो ये कैसे वर्क करेगा,
अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा होगा, लेट आई कॉपी दिस, ऐसा कुछ हम लोगों ने लिखा है। सो व्हाट विल हैपन, पहले इंटीजर ए लिखने का मतलब रैम के अंदर एक ए नाम का वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर 100 स्टोर्ड होगा, इसका नाम होगा ए। ओके, व्हाट अबाउट दिस इंटीजर बी इक्वल्स टू ए का मतलब क्या हुआ, बी नाम का एक अलग सा वेरिएबल डेवलप्ड होगा, उसके अंदर उसका नाम है एक्चुअली बी, और इसके अंदर 100 कॉपी हो जाएगा। लेट आई जस्ट कॉपी दिस 100। ओके, सो इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या, नाउ जब आप लिखोगे a इक्वल्स टू 99 तो a की वैल्यू चेंज होकर 99, a की वैल्यू कट होकर यहाँ पे क्या हो जाना, इट विल बी 99। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b, b का वैल्यू थोड़ी अपडेट हुआ है, सो इट विल बी 100। अब b में 500 करेंगे तो आउटपुट 99 and 500. फाइन, 99 एंड 500 आना चाहिए, मतलब दिस मस्ट बी चेंज टू, ओके यहाँ हमने 500 किया था, सो इट विल बी 500, बट a का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, इट्स 99। ओके, इट्स 99 ओनली। सो नाउ लेट मी टेक वन मोर थिंग। तो ये तो आप लोग को समझ में आया, दैट इज नॉन एज कॉपी बाय वैल्यू, इसको बोला जाता है कॉपी बाय। ओके, नाउ लेट मी जस्ट गो विद दिस। सो यहाँ पे पहले मैंने x और y नाम के दो वेरिएबल्स बनाए। सो व्हाट विल हैपन, x और y नाम के दो वेरिएबल्स बनेंगे, लेट आई जस्ट ड्रॉ देम। सो here I have x and y, so that is for x, this is for y, and let I just create two more. This is not an array, हाँ, ये array नहीं है। तो पहले का नाम मैं x दे देता हूँ, दूसरे का नाम हम y रख देते हैं। ओके, और x की वैल्यू क्या रखी थी, द वैल्यू ऑफ x इज 100, द वैल्यू ऑफ y इज 200, तो यहाँ हमारे पास 100 है, एंड हियर वी हैव 200। So up to this I hope यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। Now जब swap नाम का फंक्शन कॉल करोगे, at that time guys we are passing two arguments x and y, so x will be copied to a, y will be copied to b। so क्या काम काज होगा, integer a equal to x, integer b is equals to y। तो ये हो क्या रहा है, जो हमने पहले लिखा था वही चीज सही हो रही है। जैसे देखो ना, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, integer b equals to a, इक्वल टू से ही डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यहाँ की इक्वल टू से ही डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो x की वैल्यू किसमें कॉपी हुई, a के अंदर, मतलब a नाम का एक अलग सा वेरिएबल बनेगा, उसी तरीके से b नाम का अलग सा वेरिएबल बनेगा, a के अंदर x का वैल्यू कॉपी हुआ, b के अंदर y का वैल्यू कॉपी हुआ, दैट्स दैट। तो अप टू दिस आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हमने c लेके इन दोनों को स्वैप किया, स्वैप इन द सेंस वो दोनों को इंटरचेंज किया। सो ये दोनों इंटरचेंज होंगे, सो x विल बी इंटरचेंज विद दिस वन। ये यहाँ पे कुछ इंटरचेंज हुआ, यहाँ पे मेरे पास डेटा आया 200, यहाँ मेरे पास डेटा आया 200, यहाँ मेरे पास डेटा आया 100। सो गाइस a और b में डेटा चेंज हुआ, व्हाट अबाउट x एंड y, व्हाट अबाउट x एंड y, x एंड y में कोई चेंजेस नहीं है। तो जब आप x एंड y को प्रिंट करने जाओगे तो आउटपुट आएगा क्या, इट विल बी 100 एंड 200। सो दैट इज एक्चुअली नोन एज कॉल बाय वैल्यू, दैट इज एक्चुअली नोन एज कॉल बाय वैल्यू। सो ये सेम चीज MySQL में भी होता है। ओके, सेम चीज MySQL में भी होता है। तो जैसे हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स पास किए थे, जो बाय डिफॉल्ट हमने पैरामीटर्स पास किए मल्टीप्लिकेशन में, जैसे इन ए इंटीजर, इन बे इंटीजर, इन कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिखिए, डजंट मैटर, और इवन इन नहीं लिखोगे तो भी बाय डिफॉल्ट ये दोनों का टाइप क्या होता है, दैट इज इन। इन द सेंस व्हाट आई मीन टू से, कि जब मैं यहाँ से कोई वेरिएबल की वैल्यू पास करूं, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन को कॉल कैसे किया था, हमने एक्चुअली स्टैटिक डेटा पास किया था, जस्ट चेक, हमने स्टैटिक डेटा पास किया था। बट अगर मैं कोई वेरिएबल बना के पास करूं तो, so how to declare a variable, so let us just say x equals to 10। okay, so 1 minute, so once again it just generates the error, so at the rate x equals to still generates the error। 1 minute, the value set होनी चाहिए थी। depends on a version, ये actually MariaDB है, that is not MySQL, that is MariaDB, so it makes an issue। so now I mean to say, एक बार MariaDB का actually मुझे आइडिया नहीं है सिंटेक्स क्या है, but the thing is अगर आप यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाते हो, लेट ऐसे x, तो x नाम का, लेट मी गूगल, क्यों हम लोग टाइम पास करें, create a variable in MariaDB। okay, just say declare a integer, still it generates the issue। ओके, ये एक्चुअली प्रोसीजर के अंदर बनाने का है, ये तो मुझे पता है प्रोसीजर के अंदर किस तरह से बनेगा। गिव मी अ मोमेंट गाइस।
percentage is not the thing. No, that's fine. So the syntax is set at the rate a equal to 10. So a is my variable. A is my variable. In a similar way, मैं दूसरा वेरिएबल भी बना देता हूँ b, जिसकी वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ, जिसकी वैल्यू मैंने 2 रखी. Now what is my requirement कि a और b में मल्टीप्लिकेशन को पास कर रहा हूँ. ओके, a और b में मल्टीप्लिकेशन को पास कर रहा हूँ. अब मल्टीप्लिकेशन को a और b पास करना है तो ऐसा कुछ लिखे, पास a एंड b. सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, तो हमने a और b पास किया. कॉल लिखना भूल गए थे. unknown column A in the field list. What is this? मारिया दीदी काफी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है. फाइन. सो A और B हमने यहाँ से पास किया, कॉल मल्टीप्लिकेशन A एंड B. अब तक हम लोग स्टैटिक डेटा दे रहे थे. स्टैटिक इन द सेंस व्हाट, हम ऐसा कुछ लिख रहे थे 2,3 एंड समथिंग लाइक दैट. तो ये फिक्स डेटा दे रहे थे, बट अब मुझे फिक्स की जगह कुछ वेरिएबल के नाम चाहिए. तो यहाँ से अब मैं वेरिएबल्स की वैल्यू पास करना चाहता हूँ. जस्ट गो थ्रू दिस वन. हम लोग यहाँ से कुछ तो वेरिएबल्स की वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे x और y. एंड नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, यहाँ अंदर हम उनको स्वैप करना है. तो मुझे चेक करना है कि ये डेटा यहाँ चेंज होगा कि नहीं होगा. जो आउटपुट में जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ और 1 सेकंड x और y को प्रिंट करें तो ये डेटा चेंज होगा कि नहीं होगा. आई वांट टू जस्ट चेक. सो इन शॉर्ट आई मीन टू से मुझे स्वैप नाम का फंक्शन, इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मुझे MySQL में चाहिए. सो लेट मी जस्ट मेक ए पार्टीशन एंड सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करते हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग MySQL में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं. सो व्हाट टू डू, सो void की जगह क्या लिखना है मुझे, क्रिएट प्रोसीजर स्वैप नंबर्स. मैं स्वैप नंबर्स लिख देता हूँ. ओके, और a इंटीजर की जगह क्या लिखूंगा, इंटीजर a की जगह क्या लिखेंगे, a इंटीजर एंड b इंटीजर. बाय डिफॉल्ट दे आर जस्ट अ टाइप ऑफ इन. और स्टिल अगर आपको यहाँ इन लिखना है देन गाइस यू कैन जस्ट राइट डाउन. ओके, आप इन भी लिख सकते हो, बाकी बाय डिफॉल्ट उसका टाइप इन ही है. और करली ब्रैकेट की जगह क्या लिखेंगे, वी हैव टू जस्ट राइट डाउन एक्चुअली बिगिन. हम लोगों ने जो इंटीजर c लिखा था उसकी जगह हम लोग को लिखना पड़ेगा डिक्लेयर c as integer. Declare c is integer. Okay, now here I have to write down set c equals to a, set a equals to b, set b equals to c, and double set. So that's my procedure. Okay, now I want to call this. So हम लोग यहाँ पे पहले तो वेरिएबल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, set at the rate x equals to 100, set at the rate y equals to 200. अभी थोड़ी देर पहले हमने सिंटेक्स देखा. Now call at the rate x at the rate y. Okay, and finally I want to print them. तो print करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, print करने के लिए क्या था अपने पास, select at the rate x, select at the rate y. So that is how to print the data. So that is equivalent to MySQL. So पहले तो प्रोसीजर बनाते हैं and here we have to just change the delimiter. So delimiter equals to 7. So let me just copy and paste this thing. So where is the problem, as integer में कहीं पे problem दे रहा है. Fine, declare as int. So okay, वहां पे as नहीं आएगा. Sorry. But once again I copy this and paste it this way. Okay, so that's my actually function. Swap numbers. Okay, और यहाँ पे हम लोग को नाम चेंज करना पड़ेगा swap numbers. So अब दो वेरिएबल बना देते हैं. So here I have two variables, x equals to 100, y equals to 200. Let me just try to swap them. And finally let me try to print them. So guys, मैंने पहले swap नाम का फंक्शन कॉल किया, after that मैंने x को प्रिंट किया. तो x की वैल्यू ओरिजिनल क्या थी, what is the original value of x, that is actually 100. तो 200 हो जानी चाहिए थी, but x की वैल्यू हो गई क्या, that is 100, and y की वैल्यू प्रिंट करे तो वो 200 है. तो as it is रही, मुझे वैल्यू चेंज करना था, ये चेंज नहीं हुआ. So what is that, that is actually in the sense what, it is the input argument. आपका फंक्शन आपसे सिर्फ डेटा एक्सेप्ट करेगा, आपका फंक्शन आपसे सिर्फ डेटा एक्सेप्ट करेगा, इट विल नेवर चेंज द डेटा. वो डेटा चेंज करेगा बट डुप्लीकेट कॉपी आपने पास किया. आप जब यहाँ से डेटा पास करोगे, आप जब swap number नाम के फंक्शन को कॉल करने के टाइम जो डेटा पास कर दो, then this variables a and b are the duplicate variables actually. So a and b में जितना भी चेंजेस होगा वो ओरिजिनल में चेंजेस नहीं होगा, something like this. Okay, जैसे अभी हमने यहाँ पे लर्न किया. तो a and b में जितना चेंजेस होगा वो एक्चुअली x and y में मॉडिफाई नहीं होने वाला. So that is actually in argument, in type of argument. So callable statement भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है. So let me just run the same program using callable statement. So call free.java and swap data, swap numbers. Okay, so I will have two numbers, so a and b, और यहाँ पे मैं print कर देता हूँ before swapping.
and this is A. Let me just print B. Okay, in a similar way, after swapping, and here I have A and B. So after swapping वाला मैं function को call करने के बाद last. Okay, so after swapping में A और B को सबसे last पे रखने वाला हूँ. And my function will never return anything. उसमें कुछ select वाला statement नहीं था, तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए. Okay, उसमें select वाला कुछ भी नहीं था. I want to just execute this one. मुझे सिर्फ इस function को execute करना है. What is the name of your function? My function name is actually swap numbers. So I have to just change the function name, that is actually swap numbers. Okay, now this is not required. Fine. So what we did, user से दो नंबर लिए, उसको पहले प्रिंट किया, कॉल स्वैप नंबर्स को, मतलब स्वैप नंबर्स नाम के फंक्शन को कॉल किया, दो आर्गुमेंट्स पास किए, और देन आफ्टर हम लोगों ने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, एंड फाइनली हम लोग ए और बी की वैल्यू वापस चेक कर रहे हैं. So Java C, and that is call3.java. Now let me run this. So let me pass two values 100 and 200. So guys, before swapping that is 100 and 200, after swapping that is 100. So before and after that is 100 and 200. कोई changes नहीं. There is no change actually. So now what is my next requirement, sir? Like I want some changes actually. मुझे changes चाहिए. मुझे इस तरीके से work नहीं करना है. मुझे changes चाहिए. So what to do, guys? So guys, for that you require in-out parameter. For that you require in-out parameter. So let me just define once again the same function. Let me define, but I do not want to use in type of argument. What is in type of argument? जैसे यहाँ हमने in लिखा है. Now let me just modify that to in-out. तो मैं same चीज को copy paste कर लेता हूँ. Now I will not use this comment actually. I cannot use this call by value comment. Okay, और यहाँ पे हम लोग call by value नहीं लिखेंगे. So in parameter. So I hope guys in parameter सबको समझ में आया. In parameter में किसी को issue है? सबको समझ में आया? Fine. So now what I changed, मैंने function का नाम change करके सिर्फ parameter में in out किया. That's it. Parameter में मैंने in out किया और function का नाम change किया. Now let me run this. ये पूरा मैं copy paste कर रहा हूँ. Function का नाम अब swap numbers है. ठीक है. So let me copy and paste this thing. So what is the value of x and what is the value of y? Y में in out नहीं हुआ था. Okay, x का value 100 सेट किया, y का 200 सेट किया, swap numbers x and y को कॉल किया. So okay, now procedure was wrong actually, sorry. यहाँ पे c आएगा. Create replace. 1 minute. So now that's that. So now just check the value of x and value of y. So now the value of x is 200 and value of y is 100. Value of x is 200, value of y is 200. That's it. So now it's modified actually. Okay, last वाले में थोड़ा कोडिंग में चेंजेस था, मतलब लाइक यहाँ हमने गलती की थी, बट स्टिल यहाँ पे आप a लिखो या c, डजंट मैटर, उसकी वैल्यू चेंज नहीं है. स्टिल लेट मी जस्ट वंस अगेन रन दिस, तो हम लोग को कोई डाउट ना रहे. सो पुराना जो इन वाला आर्गुमेंट था, लेट मी वंस अगेन रन दैट. So now that is a swapping logic, and after that still swap नाम के फंक्शन को कॉल करने के बाद x और y को प्रिंट किया. Still the output is 100 and 200, मतलब जो x और y की ओरिजिनल वैल्यू. Just check this. So जो पहला highlighted statement है वहां पे हमने लिखा है x equals to 100. In second statement actually y equals to 200. Then we just try to print x and y. So we call the function and print x and y. So it doesn't change actually. Now what we did, हमने अब swap num1 को कॉल किया. What is the function name? I just forget. Okay. Now let me just copy this and paste it here. So हमने swap numbers 1 को कॉल किया, x और y पास किया, so it's modified. उसने उस चीज को मॉडिफाई कर दिया. जावा के अंदर से ये करना हो तो दैट्स योर होमवर्क. ये खुद आपसे करोगे कि अभी मुझे जावा में से ये कामकाज करना है. तो नॉर्मली हम लोग डेटा जैसे सेट करते थे, बट अब हम लोग को रजिस्टर आउट पैरामीटर वाला फंक्शन यूज करना है, बिकॉज़ जावा में हम लोग लिख नहीं सकते कि इन आउट पैरामीटर, बताना पड़ेगा कि यहाँ से मुझे डेटा चाहिए. ओके, सो जावा का वो बाकी रखते हैं. एंड वन मोर थिंग, दैट इज आउट पैरामीटर. आई होप कि आपको इन आउट पैरामीटर समझ में आया. आई होप आपको इन आउट पैरामीटर समझ में आया. इन आउट मतलब दैट इज कॉल्ड बाय रेफरेंस.